Hi all, a very good morning. Welcome to ILT Academy. So let us start today's session. So today I am going to cover a lot of topics. So let us start today with respect to admission and dissolution. Okay guys, so let us start today's class. So first question, आप देख सकते हैं. I am going to cover here MCQs and 3 marker questions, 2 marker questions, 4 marker, 6 marker पूरे के पूरे cover करने वाला हूँ मैं. So basically 2 markers तो नहीं रखते CBSE में, 1, 3, 4 and 6 will be done. Okay, clear. Dissolution of a partnership is different from dissolution of partnership of firm. So dissolution of partnership is different and dissolution of partnership firm is different. And the reason is dissolution of partnership does not dissolve the firm, but the firm is dissolved in the partnership firm. अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करे समझो, फर्म को डिसॉल्व करने का जरूरत नहीं है. बट वही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करे समझो, द फर्म इज गोइंग टू बी डिसॉल्व, देन पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली गोज इनटू dissolution. So this is true. So both assertion and reason are true, and the reason is correct explanation for what? Assertion. Clear ना? Understood? So ये रहेगा आपका क्वेश्चन. Now coming to the answer, A, both assertion and reason are true, and the reason is correct explanation for what? Assertion. Got it? Next, Meena and Deepthi are partners sharing profits in the ratio 2:1. They admitted Neema as a new partner, and the new profit sharing ratio is 3:2:1. On the date a debit balance of 60,000 existed in P&L account, it will be written off between Meena and Deepthi in what? 2:1. So this was the decision made. Now the reason is debit balance in the P&L account is a fictitious asset, and at the time of reconstitution of the firm, all the fictitious assets are written off to the capital accounts and of old partners in old PSR. This is the reason. Both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation of assertion. Not only P&L balance, but reserves को भी हम distribute कर देंगे in old ratio. Okay, it might be admission, it might be retirement, it might be death. Old reserves and losses or fictitious assets जो रहते हैं ना, उनको write off करेंगे in old sharing ratio. Only the goodwill in the case of admission, it will be distributed in sacrificing ratio, and in the case of retirement and death, it will be distributed in the case of what? Gaining ratio. That also that is with respect to the partner who is coming in, that is incoming partner or deceased partner. So ये भी क्या रहेगा ऑप्शन, बता सकते क्या? So both assertion and reason are true, and reason is correct explanation for what? Assertion. So इसका आंसर भी हो गया A अपना. Clear? Next, third one. Now at the time of dissolution of the firm, loan given by the partner to the firm is paid out of the amount realized on the sale of assets after paying off the above paying off outsider liabilities, but before the repayment of capital, and after paying off capital of partners. After paying off outsider liabilities, but before the repayment of capital, after paying off capital to partners, after paying off outsider liabilities. So इसका आंसर क्या रहेगा बताऊँगा. सी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर अगर पार्टनर ने लोन प्रोवाइड करा होगा फर्म को, सो पार्टनर इज कंसिडर एज व्हाट? इनसाइडर ओनली स्टिल. सो द फर्म विल रीपे द लोन ऑफ व्हाट? आउटसाइडर्स. देन दे विल पे द लोन टू हुम? इनसाइडर्स. दैट इज पार्टनर का लोन रीपे करेंगे. उसके बाद में क्या हो जाएगा? द लोन विल बी रीपेड टू any other liability still left or capitals will be taken care later. So इसका ऑप्शन हो गया B. Okay, after paying off outsider liabilities but before the repayment of what? Capital. But before the repayment of capital. Now the account which is prepared on dissolution of partnership firm is P&L appropriation account, revaluation account, P&L adjustment account, realization account. आप याद रखो, revaluation account and P&L adjustment is same. ओके, सो यहाँ पर बनाएंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट. सो फोर्थ वाला क्या रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट. एनी डाउट्स? क्लियर? आ गया मैं समझ में? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट. ABC are partners sharing profits in the ratio 3:2:1. They admitted D for 1/6 share. C would retain his old share. Calculate the
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ऐसे क्वेश्चंस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब देखो मैम, इसमें सॉल्विंग भी समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन तो समझ में आया ना, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो व्हाट 3:2:1. They admitted D for 1/6 share and C would retain his old share. Now D's share is very clear, it will be 1/6 and C would also retain his old share. So C का भी शेयर कितना रहेगा, that is 1/6. नाउ टोटल एक वाटरमेलन को समझ लेंगे फर्म को। सो इसको 6 पीसेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6. सो 1/6 इज विथ whom D, 1/6 is with whom C. So leftover pieces are what, 4/6. That is the reason you will do what, 1 minus 6, 1/6 again minus 1/6, which will give you what, 4/6. This belongs to whom, A and B. So A का शेयर कितना रहेगा, 4/6 into what, the old ratio, that is 3/6, which will be how much, 12/36. B का शेयर कितना रहेगा, सेम वही 4/6 into what, 2/6, which is 8/36. Coming to C's share, it will be 1/6 into what, 6/6, which is 6/36. Now coming to D's share, it is going to become what, 1/6 into 6/6, which is 6/36. Any doubts? So therefore the share is going to be 12:8:6:6. Clear now? Understood? Did not understand. But 12:8:6:6. कुछ मिस्टेक करा क्या, 6 minus 6, that is 30 आना चाहिए। Oh sorry, a small mistake. Now 4/6 will be shared in what ratio? ऐसा ही करना है। So 4/6 into what, 3/5, which is 12/30, and this is what, 2/5, which is 8/30. 1/6 को 5 से और 5 से मल्टीप्लाई करो, 5/30 हो जाएगा, फिर 5/5 करो, कितना हो जाएगा, 5/30. So the ratio will become what, 12:8:5:5, and the answer is this one, 12:8:5:5. Got it ma? Any doubts? Clear? Please note down this. अब देखो, see the next question. See, when you see the next question, no,
At the time of dissolution of the firm, assets taken over by the partners should be credited to realization account, or realization account should neither be debited nor credited, or debited to realization account or debited to revaluation account. Very simple. Asset taken over either by partner रहने दो, वरना तो आप realize कर रहे समझो. In that case it will be credited to realization account or debited to partners capital account. ठीक है, clear? So ये हो जाएगा फिफ्थ का आंसर. So credited to realization account. Any doubts, ma? Clear? At the time of dissolution of a firm, assets taken over by the partners should be credited to realization account. Realization account में हम credit side डालेंगे and same wise partners capital account में वो debit हो जाएगा. But partners capital का के बारे में नहीं बोले and ये तो revaluation नहीं हो सकता. Clear? Debit नहीं करना. Realization account should be neither credited nor debited. ये तो हो ही नहीं सकता. ठीक है? Next. ये देखो सिक्स्थ क्वेश्चन. यहाँ पर A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They decided to admit Girish as a new partner and new profit sharing ratio would be 2:1:2. Girish paid 2 lakhs as his share of goodwill and 30% of the amount of premium of goodwill is withdrawn by the sacrificing partner. Amount withdrawn by B will be what? So we know this. When the new partner is coming into the business, he will bring goodwill. That goodwill either can be retained in the business or it can be withdrawn by the partners. Now in this case it is being withdrawn by the partner. First thing, goodwill will be distributed in what ratio? Sacrificing ratio. So withdrawal भी कैसे करेंगे? Sacrificing ratio में ही करना पड़ेगा. अभी पूरा goodwill withdraw कर रहे हैं या dependingly in this question 30% of the goodwill is being withdrawn. अब देखो A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. Now old ratio, that is what? 3:2. New ratio, that is what? 2:1:2. So A का old ratio क्या है? 3/5 and what is the new ratio? 2/5. So 3 minus 2 कितना हो जाएगा? 1/5. B का कितना हो जाएगा? 2/5 minus 1/5. Old ratio minus new ratio will give you what? Sacrificing ratio. Sacrificing ratio. So आंसर क्या बन जाएगा? 1/5. So finally आंसर क्या आ गया? 1:1. Now goodwill bought by the Girish paid 2 lakhs as a share of goodwill. मतलब 1 lakh, right? That will be given to the partners. But कितना withdraw करे? The amount of premium of goodwill credited is withdrawn by the sacrificing partner. That is 30%. इसका 30% कितना हो जाएगा? 30,000. And इसका भी 30% कितना हो जाएगा? 30,000. Luckily दोनों partners का भी क्या है? Equal amount withdrawn. 30,000, 30,000. Clear? This is how this concept works out. Any doubts, ma? Okay, you can pause the video if you want to record it, please. No. अब देखो, at the time of dissolution, if realized value of intangible asset is not given, the realized value will be taken as. At the time of firm's dissolution, if the realized value of intangible asset is not given, the realized value will be taken as what? That is a question. The realized value of intangible asset. याद रखो, intangible asset we will be booking it as what? Nil. वही tangible asset है समझो. It will be taken as same as book value. Same as book value. Liability also. It will be same as book value. Clear? Now how goodwill account appears in the balance sheet be treated in the case of dissolution of the firm? How goodwill account appears in the balance sheet should be treated in the case of dissolution of the firm. First thing, goodwill appearing in the balance sheet, that is called as existing goodwill. Admission, retirement, death में हम क्या कर देंगे? उसको write off कर देंगे by transferring it to partners capital account. इसका entry भी क्या रहेगा? Partners capital account debit to goodwill. So partners capital account में आप debit side to goodwill बोल के लिखेंगे. Clear? But the question is not with respect to admission, neither retirement nor death. This is question with respect to dissolution. Dissolution, it is something different. उसमें क्या? You won't transfer the existing goodwill to partners capital account, but ये goodwill को हम क्या करेंगे? Realization account में लेके जाएंगे. ठीक है? So the correct option would be transfer to the capital account at market value, transfer to the capital account at book value, transfer to the realization account at book value, transfer to the realization account at market value. Answer is transfer to the realization account at book value. Clear? Next.
Now Ram Sham were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. Mohan was admitted as a new partner for 1/5 share of the profits of the firm. Mohan bought 2,50,000 as his share of capital and 2 lakhs as his share of goodwill premium. The value of the firm's goodwill was how much? ये देखो आ गया आपका फेवरेट. Mohan bought 2,50,000 as his share of goodwill and 2 lakhs as his share of goodwill. The value of firm's goodwill is how much is the question. ये कैसे करेंगे सर? वेरी सिंपल. Mohan bought how much? Mohan got how much share? 1/5 share. अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, एक वाटरमेलन के जैसा ड्रॉ कर दिया. So 1 out of 5 parts he got. For this one part he bought how much goodwill? 2 lakhs. तो फर्म का गुडविल कितना हो जाएगा? 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh, 2 lakh. So total कितना हो गया? Indirectly also you can calculate. This is what? 10 lakhs. Total goodwill is what? 10 lakhs. But हम क्या करेंगे? 2 lakh into what? 5/1, which will be how much? 10 lakhs. So the goodwill will be what? 10 lakhs. Any doubts? ये क्वेश्चन यहाँ पर ही आंसर कर देंगे. देखो, now what should be the journal entry when A takes over the loan payable to Mrs. A? Now Mrs. A's loan is being paid by A. Okay, then in this case what will be the entry? Entry is very simple. Realization account debit to A's capital account. क्योंकि liabilities हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे, बट उसका डिस्चार्ज जो है ना डेबिट साइड होगा. सो डेबिट साइड हम क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account. आंसर इज व्हाट? 9th one B. Realization account debit to A's capital account. So this will become realization account debit to A's capital account. Any doubts, ma? Clear, right? Next. Next, employee provident fund. ये जो है ना, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स बिकॉज इट इज अ फ्री रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और फिक्टिशियस असेट और स्टैट्यूटरी लायबिलिटी. ये जो है ना एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट ए रिजर्व, बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी. यू नीड टू कंपल्सरीली पे दिस इज एन ऑब्लिगेशन. सो ये आपको पे करना ही पड़ेगा. दैट इज द रीजन इट इज स्टैट्यूटरी लायबिलिटी. क्लियर? देखो, if the total assets of the firm are 12 lakhs and total liabilities are 2,40,000, what will be the capitals of PQR if they share in the ratio their capital and profit sharing ratio is 1:2:3? See, if the total assets of the firm is 12 lakhs and total liabilities are 2,40,000, what will be the capital of PQR if share of profit in the ratio of their capital and profit sharing ratio is 1:2:3? and यही capital ratio है एंड यही क्या हो गया? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो गया. सो वेरी सिंपल. फर्स्ट थिंग, बैलेंस शीट में यू विल बी हैविंग लायबिलिटीज, यू विल बी हैविंग एसेट्स. एसेट्स का टोटल कितना हो गया? 12 lakhs. एंड लायबिलिटीज़ में इनसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटीज रहेंगे. आउटसाइडर लायबिलिटीज इज 2.4 lakhs. सो इनसाइडर लायबिलिटी कितना हो गया? 9.6 lakhs, विच इज नथिंग बट व्हाट? कैपिटल. राइट नाउ डिस्ट्रीब्यूट 9,60,000 इन दिस रेशियो 1:2:3. सो 1/6. ये कितना हो जाएगा? 1,60,000. नेक्स्ट 9,60,000 इंटू कितना? 2/6 विच इज़ 3,20,000. नेक्स्ट 9,60,000 इंटू 3/6 विच इज़ हाउ मच? 616 3 4,80,000. सो आंसर इज व्हाट? बी. 1,60,000, 3,20,000 एंड 4,80,000. परफेक्ट. क्लियर ना? 12th वाला क्वेश्चन एक बार देख लेंगे. ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, on the dissolution of a firm, partners capital account balance was 63,000 and creditors balance was 12,000 and P&L account debit balance was 6,000. Profit on realization of assets was 7,800. The amount realized from assets was how much is the question. On the dissolution of a firm, partners capital account balance was how much? 63,000 and creditors balance was 12,000 and P&L debit balance was 6,000. So profit on realization of assets was 7,800. The total amount realized from, this is very very tricky question. यहाँ पर हम क्या करेंगे? One thing, we will prepare what? A balance sheet and we will prepare what? Realization account. जो हमें दिए ना उसको एक proper format में and make it very simple. Okay? Whenever, see, though it is an MCQ, no, make it properly. Okay?
एक डमी बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट इज योर क्वेश्चन, और एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे. नाउ सी पार्टनर्स कैपिटल में कितना है 63,000 और क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 12,000 एंड P&L डेबिट बैलेंस. ही याद रखो P&L क्रेडिट बैलेंस विल बी ऑन द लाइबिलिटी साइड एंड P&L डेबिट बैलेंस जो है ना वो यहाँ पर रहेगा, दैट इज 6,000. क्लियर. नेक्स्ट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स. सो यहाँ पर टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स वाज 7,800. ओके सो 63,000 और 12,000 ये 6,000 हो गया. सो व्हेन यू ऐड दिस नो 75,000 हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना 75,000. सो 75,000 में से 6,000 निकाल दिए तो ये कितना हो जाएगा 69,800 इज सन्ड्री एसेट्स वैल्यू. ओके नाउ सन्ड्री एसेट्स जो है ना वो यहाँ पर लिखेंगे हम टू सन्ड्री एसेट्स 69,800 और कमिंग टू P&L तो ये कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा. क्लियर. एंड क्रेडिटर्स कितना है 12,000. क्रेडिटर्स 12,000. सो इफ नथिंग इज मेंशन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे टू बैंक 12,000 लिख लेंगे एंड व्हेन यू ऐड दिस नो 69,800 प्लस 7,800 69,000 होना चाहिए. 69,000 plus 7,800 which will be technically 76,800. This is what by bank. Okay और else 69,000 सन्ड्री एसेट्स आए ना आपको 69,000 को 7,800 से ऐड करने पर कितना आ जाएगा 76,800. दिस इज हाउ यू डू. क्लियर. ये एक मैच दो कॉमन क्वेश्चन. अब देखो ये अच्छी तरह से देखो. See X, Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2 with the capitals of how much 2 lakhs each. They admitted Z as a new partner and new profit sharing ratio between X, Y, Z is 2:1. Z has paid 120,000 for his capital and 60,000 as a premium for goodwill. The new partner has bought 1,20,000 for his capital and 60,000 for his premium for goodwill. Now goodwill bought by Z is retained in the business. Yes, okay. So goodwill कितना लाया था 60,000 which will be shared among the partners in what ratio? Sacrificing ratio. How do we calculate sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio. Old ratio of X is what? 3/5. New ratio of X is what? 2/5. From this you will get what? 1/5. Y का कितना है 2/5 minus what? 2/5 which is what? 0. So entire goodwill will be taken by X. Find out the capital balance of each partner. Okay. So पूरा goodwill उसको ही मिलना चाहिए. Percent of the premium for goodwill is withdrawn by the sacrificing partner in that case. Okay. इस केस में so what is the capital balance they are having already? 2 lakh. A, B, C. 2 lakh. And the new partner has bought what? 1,20,000. And the goodwill, ये जो है 60,000, that will be shared among whom? A and B in what? X and Y in what? Sacrificing ratio. But sacrificing ratio क्या है? You see that X को ही आ रहा. So X को आया समझो. So X को कितना मिलना चाहिए यहाँ पर? Entire 60,000 premium for goodwill will go to X. So यहाँ से होता 2,60,000. So 2,60,000 and 2 lakh and 120 ये रहेगा. So 1 is matched with what? 3. Okay, ये A is matched with what? Third one. Now 30% of the premium of goodwill was withdrawn. I'm sorry. 30% of the goodwill was withdrawn by the sacrificing partner. ये 60,000 ये credit side है ना. 30% कितना होता? 18,000 withdraw करे समझो. 260 minus 18 will give you what? 2,42,000. So B is going to be attached with what? 242 मेरे को यही दिख रहा. So answer would be what? 3, 4. I don't see 3 for first option. So my option would be D before solving what? The C and D. Clear? Like this you need to do this. Okay? Not time consuming but proper understanding of the concept is required to do this sum.
अब देखो, in which condition a partnership firm is deemed to be dissolved. Deemed to be dissolved. एक मिनट ये लिख लो, 1 second. Hello, sir. Sir.
check this one. What is the question? In which condition a partnership firm is deemed to be dissolved? Dissolve कब हो जाएगा? It is in the case of retirement of a partnership, or on the expiry period of a partnership, or the loss in partnership, or partnership admission. Admission में to be dissolved नहीं होता, retirement में भी नहीं होता. It is called as reconstitution. Losses आए तो partnership बंद करना बोले तो कोई भी business नहीं चलता. So the answer is what? On the expiry of period of partnership. Any doubts? Clear? Next. अब देखो, मोनू सोनू were partners sharing profits in the ratio what? 2:3. They admitted Ram as new partner for 3/5 share in the profit, which he acquired 1/5 from Monu and 2/5 from Sonu. Okay, the new profit sharing ratio of Monu, Sonu, Ram will be what? So very clearly, see, ये सम करने से पहले आपको दो चीज़ें मालूम होना चाहिए. That is what? From, and another one is what? Off. Off is share multiply बोले तो multiplication करना है, from बोले तो directly minus कर सकते हैं. So यहाँ पर 1/5 from Monu and 2/5 from Sonu बोल के है. So it is directly Monu's share will be 2/5 minus 1/5, which will be what? 1/5. Next, Sonu's share, which will be what? 3/5 minus what? 2/5, which is what? 1/5. And Ram has received directly ये sacrifice दे दिया आपको 1/5 plus 2/5, which is 3/5. So the final ratio will be 1:1:3. Clear? This is the answer for it. Any doubts? Clear? अब देखो 15th वाला क्वेश्चन. A loan of 10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. Now what is the journal entry recorded for the same? A loan of 10,000 advanced by a partner to the firm was refunded. मतलब हमने पार्टनर से लोन लिया, तब एंट्री क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट. नाउ वी हैव रिफंडेड दैट, सो एंट्री विल बी व्हाट? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. एनी डाउट्स? सो द एंट्री विल बी विद द फर्स्ट वन, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. Clear? Next, investments of 2 lakhs were not shown in the books. One of the creditor took over these investments in full satisfaction of his debt of 2,20,000. How much amount will be deducted from the creditors is the question. In full satisfaction of his debt. अब देखो, see, इस क्वेश्चन में क्या करना? See, जनरली हम क्या करते हैं? This is with respect to investments कितना रहना चाहिए? 2 lakhs, which was not shown in the books. And one of the creditor took over these investments in full satisfaction of his debts of 2,20,000. How much will be deducted from the creditors? Deducted from the creditors पूछे, तो इतना करने का जरूरत नहीं है. Full satisfaction of his debt of 2,20,000. So how much will be deducted from his debt? 2 lakhs, and remaining 20,000 will be treated as what? Gain. So the amount which will be reduced is what? 2 lakhs. This is very very important question. अच्छी तरह से देख लो. X and Y are partners sharing partners with the capitals of 39,000 and 27,000. They admitted Z as a partner for 1/5 share in the profit of the firm. Z brings 24,000 as his capital. Z's share of premium for goodwill is what? अब देखो, see, this is the question of hidden value of goodwill. ये question क्या है? Hidden value of goodwill. How to find hidden value of goodwill is nothing but value of firm minus what? All partners capital share. वो माइनस कर दिया समझो. यू विल बी गेटिंग व्हाट? हिडन वैल्यू ऑफ गुडविल. सो वेरी सिंपल, वैल्यू ऑफ द फर्म इज नथिंग बट, सी, हाउ मच इज अ पार्टनर गेटिंग? 1/5 शेयर. सो वन पार्ट के लिए वो कितना ला रहा है? 24,000. सो टोटल फर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24,000 इंटू कितना? 5/1, विच इज 1,20,000.
So the value of firm is 1,20,000 minus all partners capital, that is 39,000 plus 27,000 plus 24,000. ये निकाल दिए समझो, then you will get the hidden value of goodwill. 1,20,000 minus 39, 27, 59, 59 plus 7, 66, 66, 70, 90,000. So ये हो जाएगा 30,000. This is hidden value of goodwill with respect to firm. ये firm का है. Now the new partner is admitted for how much share? 1/5 share. So 30,000 into 1/5. ये करने पर कितना आ जाएगा आपको? 6,000. So the goodwill value will be what? 6,000 will be Z's share of premium for goodwill. Any doubts? Clear? Next, 17th one. 18th one. When the realization expenses are to be borne by the partner, it is credited to which account? Okay, very simple. When realization expenses are borne by the partner, it is credited to partner's capital account. Which of the following is not readjusted at the time of dissolution? Which of the following is not readjusted at the time of admission of a new partner? Asset account or P&L account or profit sharing ratio or capital account? Which of the following is not readjusted at the time of admission of a new partner? So which of the following is not readjusted at the time of admission of partner? यहाँ पर P&L account. सी असेट्स अकाउंट को हम रिवैल्यू करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाएगा एंड कैपिटल अकाउंट में भी रीएडजस्ट होगा. P&L अकाउंट में कुछ भी बदलाव नहीं आएंगे. नेक्स्ट, now what journal entry will be passed on dissolution of a partnership firm when a partner agreed to bear the dissolution expenses for rupees 10,000 and actual expenses were 15,000? When partner agreed to bear these expenses, okay, clear? In this case, what will be the adjustment entry? And actual expenses were 15,000. So very simple. अब देखो, partner is going to bear the dissolution expenses, so then we are not going to care with respect to actual expenses. So very simple, realization on debit to partner's capital account. अगर वही partner is taking the responsibility to pay it but not going to bone it, in that case ये ऊपर वाला हो सकता है realization नहीं, या तो दोनों debit में नहीं आते, so DE हो सकता है. Clear? On dissolution, if a partner pays the firm's liability, which of the following account is debited? Dissolution, if a partner pays the firm's liability, firm का liability मतलब creditor को partner is paying, in that case realization account में हम क्या करेंगे? creditor credit side रहेगा and that will be realized by partner, so to partner's capital account. So realization account debit to partner's capital account is the entry. So which account is debited ma here? Realization account is going to be debited. Any doubts? Clear? Next, 19th वाले का realization, if you want I can pick it. Realization account. Hello? అది మా వైఫ్ మాట్లాడతాను, తర్వాత మాట్లాడతాను. Twentieth one, ABC are partners sharing the profits and losses in the ratio of 5:4:3. They admitted D for 1/7 share. It is agreed that B would retain his original share. Then what is the sacrificing ratio? We would retain his original share. Then what will be the sacrificing ratio? What is the formula for sacrificing ratio? Old ratio minus new ratio. अब देखो, A, B, C are the partners. A का रेशियो कितना है? 5/12. B का रेशियो कितना है? 4/12. C का रेशियो कितना है? 3/12. D is getting what? 1/7. Okay, it is agreed that B would retain his original share. Very simple. Total part we will assume it to be 1.
ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम करें एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन माइट कम इन द एग्जाम. So 1 minus 1 by 7 will be what? 6 by 7. And B is also going to retain his share. That is minus 4 by 12, which is 1 by 3. Which is 18 minus 7 divided by 21, which is 11 by 21. So the leftover firm's value is what? 11 by 21. That will be distributed among whom? A and C. A का C का ratio क्या है? 5:3. So into 5 by 8 and 11 by 21 into 3 by 8. Oh, but the question is asking only sacrificing ratio. Sacrificing ratio is nothing but 5 and 3. 5:3 हो जाएगा. A and C is 5:3. They are not asking for new ratio. Sacrificing ratio will be what? 5:3. Clear? ये देखो 21st question. Past journal entries in the following cases. Expenses of realization of 600 to be borne by the firm and are paid by the Mohit, a partner. Okay. So ये journal entries का question अच्छी तरह से ध्यान में ले लो क्योंकि ये आने का हाई चांसेस है. So I'll take only this one second. Let us focus on the journal entries properly. Ask the journal entries in the case of dissolution. Dissolution में जब भी journal entries पूछेंगे ना तो 3 ही अकाउंट आते हैं. One is realization account and another one is partners capital account and another one is cash account. So majoritarily ये 3 ही रहेंगे. Only in the case of loan paid off उसमें ही अलग एंट्रीज रहेंगे. Now expenses of realization of 6,000 to be borne by the firm and are paid by the partner. See, firm is going to accept the liability but partner is going to pay the liability. So firm के हाथों से कैश जा रहा क्या? नहीं. So realization expenses paid का जनरल एंट्री क्या रहता है? realization to bank. But यहाँ पर बैंक कब आएगा? firm pays. Firm is not paying here. Firm is bearing it but partner is paying it. So in this case entry will be realization account debit to partners capital account and answer is what? 600-600. Any doubts? Now coming to the partners capital, नाम क्या है? Mohit. So entry will be Mohit capital account. Realization account debit to Mohit's capital account. Very very important. Mohit, one of the partner of the firm, was asked to carry out the dissolution of the firm, for which he was allowed a salary of how much? 2,000 rupees. So this is like a remuneration. Okay, he was allowed a salary and firm is going to bear that. Same to same concept. So यहाँ पर भी एंट्री क्या रहेगा? Realization account debit to what? Mohit's capital account. कितना रहेगा? 2,000. Clear? Now motor car of book value 50,000 taken over by the creditor at a book value of 40,000 in settlement. So इसका एंट्री क्या रहेगा? थर्ड वाले का. See, whenever a creditor adjust what assets, creditor asset लेके जाएगा ना, no entry. Clear? Next 22nd one. देखो, ABC are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 2:1. They admitted D for how much share? 1/6 share in the profits. The new profit sharing ratio will be 13:8:4:5. Okay, respectively. D bought 5 lakhs as his capital and 60,000 for his share of goodwill. So pass a necessary general entry. Very simple. Whenever a partner brings capital and premium for goodwill, what is the entry? Cash / bank account debit to what? The new partner's capital account. D's capital account to what? To premium for
गुडविल कितना लाया पार्टनर ने, 5 lakhs एज एस कैपिटल एंड 60,000 एज एस शेयर ऑफ गुडविल. सो टोटल कितना हो जाएगा, 5,60,000. एंड कमिंग टू दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी एडजस्टेड बाई होम to the remaining partners in what ratio, sacrificing ratio. How do you calculate sacrificing ratio, which is old ratio minus new ratio. 3 लोग है A, B and C. A का रेशियो क्या है 2/5, B का रेशियो क्या है 2/5, C का रेशियो क्या है 1/5 माइनस न्यू रेशियो. न्यू रेशियो इज नथिंग बट व्हाट 13 डिवाइड बाई 13, 8, 21, 25, 30. Next 8 divided by 30. Next 4 divided by what, 30. So here you can multiply with 6 into 6 into 6 into 6 into 6. Oh wow, very interesting question. अब देखो मैं, so 2 into 6 कितना हो गया 38, 21, 25. टू इंटू सिक्स कितना हो गया 12 माइनस 13 डिवाइड बाई 30 विच इज़ नथिंग बट व्हाट -1/30. एंड हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट 12 minus 8 divided by 30 which is what 4 divided by 30. And here 6 minus 4 divided by 30, it's 2/30. ये आ गया -1:4:2. सर हमें तो नॉर्मल रेशियो आया तो हमें मालूम है कि गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट यहाँ पर तो टोटली डिफरेंट दिख रहा. 2/6 क्लियर, 2/5 minus what 13/30 gave you what negative. In this case what we need to do is 4 plus 2 minus 1 which is what 5 times. So यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 60,000. सो जनरल हाँ what 7 वो एक 1/-1 is gaining ratio, but अपन उसको वाइबिलिटी -4 + 2 + 1 करेंगे ना. हाँ वही करेंगे. 4 + 2 6 होता, 6 - 1 होता 5 होता. हाँ 6 - 1 is 5. So -1/5, 4/5, 2/5 करना है आपको गुडविल ऑफ द फर्म से, वरना तो 60,000 फॉर इज शेयर गुडविल. हाँ सो एंट्री हाँ परफेक्ट. यहाँ पर हम क्या करेंगे जनरली प्रीमियम फॉर गुडविल 2A 2B 2C लिखते थे, अब ओनली 2B 2C को मिलना चाहिए. एंड A इज ऑल्सो गेनिंग A अकाउंट डेबिट. प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 60,000 एंड 60,000 का -1/5 कितना हो जाएगा 12,000 ना. 5 times 12,000 -1/5 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा 72,000. नाउ 72,000 को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 विच इज़ व्हाट 2/3 324 48,000 and 24,000 24 2:1 yes 24,000. very important. क्लियर. गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों भी आ रहे समझो. इन दिस केस अगर सैक्रिफाइसिंग आ रहा था तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2A 2B 2C कर देते थे, बट यहाँ पर क्या हो रहा आपको गेन. सो A अकाउंट डेबिट करेंगे. एंड ये 12,000 कैसे कैलकुलेट करें सर 60,000 इंटू वट -1/5. क्लियर. 1/5 5 कैसे आएगा 4 + 2 6 6 + 1 6 - 1 कितना होगा 5. लाइक दिस. एनी डाउट्स राइट डाउन. सर वो फर्स्ट वाला एंट्री जो कैपिटल गुडविल आ रहा है उसका एंट्री है ना सर, कैश टू बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल. हाँ कैश और बैंक एनीथिंग यू कैन राइट. बैंक भी लिख सकते हैं आप, नथिंग इज मेंशन नाउ. बोथ आर करेक्ट ओनली. कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. तो जो गुडविल मेंशन है कि पार्टनर लेगा तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना. यस ये पार्टनर ए गेन कर रहा ना, दिस इज ओनली वेरी इंपॉर्टेंट. ए अकाउंट डेबिट. सो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं. सी जस्ट गोइंग विथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल नॉट गिव यू द कॉन्सेप्ट. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 3 मार्कर का क्वेश्चन है. डन ना.
noting it. Very important. Cash bank to capital to premium for goodwill. Premium for goodwill will be distributed in what ratio? Sacrificing ratio. But यहाँ पर एक पार्टनर गेन कर रहा, so that is the reason गेनिंग पार्टनर को क्या कर दिया हमने? डेबिट कर दिया. गेनिंग पार्टनर का शेयर कैसे करेंगे हम? कैपिटल इनटू, हाँ, यस. डन मा? नाउ वी हैव फिनिश्ड व्हाट 22 का ये पार्ट करें ना, और क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ ताकि आपको एक गुड एक्सपोजर मिल जाएगा. वी आर ऑलरेडी इन 22 इन द लास्ट 50 मिनट्स स्ट्रीम. देख लो, 1 सेकेंड. ओके, ये देखो, प्रिया and Shiksha are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. They admitted Sarita as a partner and the new profit sharing ratio is 3:2. Very simple. Now at the time of admission, Sarita investment were rupees 40,000. Half of the investments were taken over by Priya and Shiksha in their profit sharing ratio. Now remaining investments were valued at what? 25,000. Priya's share in profit on revaluation was 3,000. Calculate the value at which both the partners will take the investment. Priya's share in the profit on revaluation was 3,000. ये आ रहा क्वेश्चन समझ में आपको? हाँ, ट्रिकी है क्या? Half the investments लेके चले गए वो दोनों, but the current remaining investments were at 25,000 और प्रिया का share in profit is 3,000. तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया. Okay, no problem. Don't worry. यहाँ पर देखो, Priya and Shiksha are partners in a firm sharing the profits and losses in the ratio what? 3:2. They admitted Sarita as a partner and the new profit sharing ratio is what? 3:2. At the time of admission of Sarita, the investments were how much? 40,000. Half of the investments are taken over by what? Priya and Shika. Okay, new partner से मतलब नहीं, old partners का देखो आप. 40,000 in their what ratio? 3:2. Half of the investments, मतलब half कितना हो गया? 20,000 was withdrawn by Priya and Shika in their profit sharing ratio. वो कितना हो जाएगा? 12,000, 8,000. Half 20,000. 12 and 8. Now in their profit sharing ratio, remaining investments were valued how much? Remaining investments 20,000. Profit sharing ratio 3:2 ही है ना? हाँ, तो 20,000 का 3:2 तो 12,000, 8,000 ही होता ना? Very good. 20,000. Half of the remaining investments were valued at what? 25,000. So gain on यहाँ कितना हो गया? 5,000 हो गया. Now Priya's share in profit on revaluation is how much? 3,000. So other partner का share कितना हो जाएगा? 2,000. वो मालूम है ना हमें revaluation में. Now calculate the value of both the partners at which both the partners will take the investments. ये तो outsider लेके गया. यही है 12,000 and 8,000. That's it. तो वो कंफ्यूज करने के लिए ये बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया. ओके, मोर देन दिस. इसका हो गया 12,000 8,000. यहाँ ही हमारा आंसर खत्म हो गया. इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है. हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स. वो पार्टनर्स कितने पर लेके गए? 20,000. एंड उनका रेशियो क्या है? 3:2. दैट्स इट. So 12,000 8,000. यस, परफेक्ट. इसका जनरल एंट्री नहीं है. हाँ, record necessary journal entries in the following cases. Now creditors worth 85,000 accepted what? 40,000 as cash and investments worth 43,000 in full settlement of their claims. Dissolution में journal entries are very very important and in this session first primary phase में मैं यही लिया. देखो, creditors 85,000 के लिए 40,000 was accepted as cash and investments worth 43,000 in full settlement of their claim. So we'll only note the cash payment. Yes, very good. Creditors account debit. So entry क्या रहेगा वो बताओ. Creditors account debit, नहीं, cash account debit. See, फर्स्ट थिंग क्रेडिटर्स अकाउंट ही नहीं आता. रियलाइजेशन अकाउंट में टू बैंक आएगा क्योंकि पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं यहाँ पर.
क्रेडिटर्स को पे कर रहे राइट इनडायरेक्टली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट राइट डाउन. बट सर एक डाउट है. हाँ बाय चांस ठीक है. नाउ रियलाइजेशन क्या था? हाँ बैंक लिखने का भी रूल नहीं है यहाँ पर, कैश ही लिखना सक्स वाई बिकॉज टू कैश इज मेंशन. नो नो आई एम आस्किंग व्हाई कैलकुलेट क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर वो हो रहा ना. क्रेडिटर का अकाउंट बनाते हैं क्या आप डिसोल्यूशन में राइट. रियलाइजेशन अकाउंट इज व्हाट So if anything is this side, credit side, it will be पेड ऑफ इन ऑन डेबिट साइड. क्रेडिट साइड का वो लायबिलिटी ट्रांसफर्ड विल बी पेड. सो रियलाइजेशन टू asset to realization, हाँ. realization to asset. सो एंड सो. हाँ अब देखो क्रेडिटर्स वेर 16,000 दे एक्सेप्टेड द मिशनरी वैल्यू एट 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. यहाँ पर एंट्री क्या रहेगा? वेरी गुड. थर्ड वाला देखो क्रेडिटर्स वेर 90,000 दे एक्सेप्टेड बिल्डिंग एट 1,20,000 एंड पेड कैश टू द फर्म ₹30,000. ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर फर्म को मनी आ रहा है या जा रहा? यस वेरी गुड. सो एंट्री क्या रहेगा? Realization to cash. कैश टू रियलाइजेशन. Cash realization. ऊपर में क्या हो गया? रियलाइजेशन टू कैश था. सो यहाँ पर क्या रहेगा? कैश टू रियलाइजेशन. कितना? 30,000. ओनली 30,000. सो रिमेनिंग पार्ट के लिए एंट्री नहीं रहेगी. Whenever they say creditor took a building, entry नहीं करना, but अगर उसमें given in cash, कैश तो वही entry कैश सी रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल कैश ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट रहे तो ही वो जनरल एंट्री में आएगा. ठीक है. क्वेश्चन ये देख सकते हैं. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio what? 3:1. On 1st April 2017, they admitted C as a partner for what? 1/4 share in the profits of the firm. C bring 20,000 as for his 1/4 share in the profits of the firm. The capitals of A and B after adjustments in respect of what? Goodwill, revaluation of assets and liabilities, etc. has been worked out to be how much? Rupees 50,000. For A, rupees 1,12,000 for P. It is agreed that the partner's capital will, according to the new profit sharing ratio, calculate the new capitals of A and B, pass the necessary journal entries, assuming that A and B bought in or withdraw the necessary cash as due to the case B for making their capitals in the proportion to their profit sharing ratio. ये हो गया capital adjustment वाला question. हाँ proportionate capital. Now A and B are partners sharing profits and losses in the ratio what? 3:1. On 1st April 2017, they admitted C as what? New partner for how much share? 1/4 share. ये A is to B हो गया और ये C का share हो गया. Now C brings 20,000 for his 1/4 share. So C bought what? 20,000 for his capital part. And the capitals of A and B after adjustments in respect of goodwill, revaluation of assets and liabilities. मतलब already adjusted capitals जो है ना वो आपको दे दिया. कितना? Adjusted capitals of A and B are what? 50,000 and 12,000. Any doubts? No doubt. Next इसके बाद में क्या हो गया? B, it is agreed that the partner's capital will be according to the new profit sharing ratio. New profit sharing ratio हमें क्या है मालूम है क्या? 1/4 3/4 नहीं, ये 20,000 जो है ना रिवर्स कर दो. 20,000 into 4 times will become what? 4/1 80,000. It is what? The total capital of 3 together. 20,000 into 4/1 करने पर 3 together का capital आ जाएगा. So 80,000 में से 20,000 निकाल दो. कितना हो गया? हाँ, so 60,000 बन जाएगा राइट. 80,000 में से हमें मालूम है कि C का वैल्यू कितना है? 20,000. सो A and B टुगेदर इट विल बी हाउ मच? 60,000 अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो दैट इज 3:1 ही समझ लो विदाउट कैलकुलेटिंग न्यू रेशियो. 3/4 कितना हो जाएगा? 45,000 एंड 15,000. अब देखो ये मेंटेन करना है 45 एंड 15 बट देयर कैपिटल्स हैव बीन वर्कड आउट टू बी हाउ मच? 50,000. सो 50,000 माइनस 45,000 इसका एक्सेस क्या है? 5,000. सो A विल बी पेड ऑफ एंड B को क्या करना पड़ेगा? B को एक्स्ट्रा 3,000 लाना पड़ेगा. सो व्हाट विल बी द calculation of new capitals of A and B? Pass the necessary journal entries assuming that A and B bought in or withdraw the capitals. Bought in. So B को क्या लाना पड़ता एंड A को क्या निकालना पड़ेगा. एंट्री क्या रहेगा? A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ मच? 5,000. अभी 20 कैपिटल अकाउंट टू कैश अकाउंट. नो, कैश अकाउंट
डेबिट टू बीस कैपिटल, ये रहेगा 3000 डैश 3000. Any doubts? This is how this sum will be done. Any doubts? Yes. Entry आपको मालूम है ना, एस कैपिटल में 2 कैश, 2 इंडिकेट्स व्हाट, डेबिट साइड में 2 कैश बोल के लिखेंगे, वही क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई कैश बोल के लिखेंगे. क्लियर? इन द केस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 24th done. अब देखो 25th वाला क्वेश्चन. ए एंड बी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस व्हाट इक्वली. सो ए इज टू बी का रेशियो क्या है, 1:1. देयर फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन व्हाट 15th March 2023 विच रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ हाउ मच, लॉस कितना आ गया 30,000 ऑन व्हाट डिसोल्यूशन. ऑन द डेट the capital accounts of A showed a credit balance of how much 20,000 and B showed a credit balance of how much 30,000. The cash account had a balance of how much 20,000. You are required to pass the necessary journal entries for the transfer of loss to the capital accounts of the partner. Very simple, dissolution loss and making the final payment of the partners. अब very simple देखो मैम, और कुछ बड़ा सोचने का ज़रूरत नहीं है. हम देख लेंगे A एंड B का कैपिटल बैलेंस में कितना है 20,000 और 30,000. लॉस एंड डिसोल्यूशन वाज व्हाट 30,000. दैट विल बी बोर्न इन व्हाट रेशियो 15,000. सो यहाँ पर 15,000 माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना है 15. सो हियर इट इज़ 5,000 एंड 15,000. क्लियर? सो ये कैपिटल बैलेंस विच इज स्टिल लेफ्ट विथ व्हाट ए एंड बी. नाउ व्हाट बैलेंस कैरीड डाउन बोल के लिखेंगे क्या, नहीं, ये डिसोल्यूशन है तो क्लोज कर देंगे. क्या बोल के लिखेंगे, बैंक बोल के लिखेंगे. सो एंट्री क्या रहेगा यहाँ पर, फर्स्ट लॉस शेयरिंग का एंट्री क्या है, रियलाइजेशन में लॉस आया समझो, रियलाइजेशन टू एस कैपिटल टू A's capital to realization. Very good. So A's capital account debit, B's capital account debit to. Sir, तो loss तो आ गया 30,000 in the ratio 15,000. But why did we minus it from the credit balance? Partners capital account में you will transfer the realization loss now. वो ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एंड बैलेंस रहता वो जनरली बैलेंस कैरी डाउन रहता एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, बट दिस इज डिसोल्यूशन सो नो बैलेंस हियर. बैंक अकाउंट में सेटल कर देंगे पेइंग ऑफ लायबिलिटीज. सो फाइनल पेमेंट ये रहेगा 5,000 एंड 15,000. सो इसका एंट्री क्या रहेगा, बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल, बैंक टू ए's कैपिटल b's कैपिटल. वेरी गुड. हाँ बताओ, बैंक डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. 5,000, 15,000, 20,000 total. बैंक टू एस बीस कैपिटल नहीं होता, ये एस कैपिटल बीस कैपिटल टू बैंक होता. सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या टू बैंक बोल के लिखेगा ना, एंट्री क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक. इस तरफ लिखा हुआ सर. हाँ डेबिट साइड. हाँ तो एंट्री क्या है पार्टनर्स कैपिटल टू ए टू बी. यू वांट मी टू शो लेडजर बना के पार्टनर्स कैपिटल. बट सर इधर तो लॉस था ना, तो वो लॉस किधर आया, सेम लॉस जिस साइड आता विड्रॉल भी उस साइड ही रहता. क्लियर? सो एस कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 5,000. समझाता. कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं बता सकते क्या आप, 20,000, 30,000. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टू रियलाइजेशन
for the purpose of loss, that is 15,000. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 कितना लिखेंगे? 5,000 15,000. Can you frame this entry? A B to realization, right? वो फर्स्ट एंट्री हो गया. नेक्स्ट एंट्री क्या है? A to bank, B to bank. So A is capital, B is capital to bank account. Any doubts? Clear? ये theoretically सम समझ में आ गया. 25th वाला क्वेश्चन कैसे करना? This is how it will be done. देखो ये 25th का और Jain Gupta were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio what? 7:3. On 31st March 2024, the firm was dissolved after transferring the various assets other than cash of rupees 6,400 and third-party liabilities to realization account. The following transactions took place. So इस क्वेश्चन में क्या बताया आपको? कैश का वैल्यू कितना दिया? 6,400. एंड रेशियो क्या है उनका? J and G, which is 7:3. Clear? Debtors of 80,000. Okay, just general interest लिखना है. Debtors of 80,000 were taken over by debt collection agency at 10% discount. नहीं, क्यों नहीं एंट्री रहेगा? डेट कलेक्शन एजेंसी लेके जा रहा. दैट इज यू आर गिविंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन. दे विल पे यू हाउ मच? द रिमेनिंग मनी. 80,000 में 10% डिस्काउंट निकाल दिया तो कितना? 72,000. द फर्म इज रिसीविंग मनी. सो एंट्री क्या रहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. $72,000. राइट. नेक्स्ट वाला एंट्री. Creditors amounting to 40,000 rupees were taken over by Jain. Jain has taken over the creditors of how much? 40,000. So partner is taking responsibility to pay the liability. So firm generally pay करना, but partner is paying it. Now what is the entry? Realization account debit to partner's capital account. Realization account debit to what? Partner का नाम क्या है? Jain. How much? Next, realization expenses amounted to 5,100 were paid by whom? Gupta. Gupta is also a partner. Gupta to realization. क्यों गुप्ता टू रियलाइजेशन होगा? रियलाइजेशन टू बैंक होना. बैंक के बदले में क्या गुप्ता हो रहा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू 5,100 वेर पेड बाई गुप्ता. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुप्ता. इतना ही है, सेम ही आता एंट्री. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट है या क्या है देख लो उस हिसाब से. टू गुप्तास कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 5,100. 5,100. It is done. Now pass the necessary journal entries. डन मा? कौन सा हो गया? 25. हाँ, 26, 27, 28, 29 टिल 34 आर देयर इन दिस शीट. हो गया. एक शीट हो जाता जिसमें से आपके दो कॉन्सेप्ट दैट इज एडमिशन एंड डिसोल्यूशन विल बी डन. क्लियर? ये देखो, Jatin and Suresh were in partnership firm sharing profits and losses in the ratio what? 4:3. They admitted Samir as a new partner. Samir bought 60,000 as her share of goodwill premium, which was entirely credited to Jatin's capital account. On the date of admission, goodwill of the firm was valued at 4,20,000. Calculate the new profit sharing ratio of Jatin, Suresh and Samir. यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रहा. फर्स्ट थिंग, ओल्ड रेशियो क्या है यहाँ पर? हाँ, सो दैट इज बिटवीन J एंड सुरेश SU, राइट. 4:3. ये हो गया 4/7, ये हो गया 3/7. एनी डाउट्स इन दिस? 3/7. नाउ
See, Samir bought 60,000 as her share of goodwill. So 60,000 divided by 4,20,000, which is firm's goodwill. Which is what? 6 divided by 42, which is 1 by 7. This is nothing but what? The new partner share. आ रहा समझ में? And ये new partner goodwill आया divided by what? Firm's goodwill. वो करने पर उसका share आ जाएगा. ठीक है? Clear? Very simple. No? Goodwill of the firm into his share will give you what? His share of goodwill. Okay? His share will give you his share of goodwill. So उसको reverse भेज दो. So यहाँ से आ जाएगा आपको 1/7. Any doubts? Clear? ये 1/7 ये रहेगा. 1/7 once you get. No? अब sacrifice कौन करे यहाँ पर? समीर जो गुडविल लाया, ओनली जितिन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट. मतलब ओनली वन पार्टनर हैज सैक्रिफाइस्ड. कितना सैक्रिफाइस करा? 1/7. ही गॉट 1/7, सो ही सैक्रिफाइस्ड 1/7. सो 4/7 माइनस 1/7 कितना होगा? 3/7. एंड इसके पास कितना है? 3/7. एंड न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 1/7. सो व्हाट इज द रेशियो? 3:3:1. दैट्स इट. एनी डाउट्स? थ्री इज टू 1. एनी डाउट्स? डाउट है? People can have 10 minutes break now. 12:58 हो रहा. 1:10 से again we will resume in the session. The stream will be like that.
Okay. Next, 26th is done, right? 27 कर लें. See, especially I have taken all dissolution journal entries in this session so that it will be easy for you. Give the necessary journal entries for the following transactions on the dissolution of the firm of Amit and Rahul on 31st March 2023 after the transfer of various assets other than what? Cash and third party liabilities to realization account. They shared the profits and losses in the ratio 2:1. There was a bills of exchange of how much? 10,000 under discount. The bill was received from Dinesh, who became. The bill was received. The bill was not received from Dinesh, who was insolvent. वो insolvent का मतलब अभी उनके पास पैसे नहीं है. That is the thing. Clear? So he is on to what? Bankruptcy. In that case. अब ये क्वेश्चन में द बिल्स ऑफ एक्सचेंज वॉज डिस्काउंटेड विथ होम बैंक. सो अभी हमारा लायबिलिटी बनता है कि बैंक को पे करना. द फर्म विल पे इट. पे कर रहा बोले तो कैश आता है या जाता. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. इसका एंट्री क्या रहेगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक. एनी डाउट्स? नाउ बिल्स पेबल ऑफ 30,000 फॉलिंग ड्यू ऑन 30th April 2023 वॉज डिस्चार्ज एट 29,550. सो बिल्स पेबल 30,000 था, हमें 30th April को पे करना था, हमने पहले ही पे कर दिया. फॉर दैट पर्पस इट वॉज 29,550. सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? रियलाइजेशन बैंक. पैसे जा रहे या नहीं जा रहे वो देख लो, क्लियर हो जाएगा आपको. नाउ क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 टुक ओवर एन असेट. हाँ 10,000 एक ही अमाउंट है ना. 29,550 इस क्वेश्चन. 29,550 हाँ यस. थर्ड केस में देखो. Now creditors of 30,000 took over a stock of how much? 10,000 at 10% discount and the balance was paid to them in cash. कैश तो पे कर रहे हैं हम, कितना पे कर रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन. 10,000 स्टॉक लेके गए. एट व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट? 10%. सो 9,000. 10,000 में 1,000 निकाल लिए तो कितना? 9,000. सो 30,000 देने का था हमें क्रेडिटर्स को, 9,000 स्टॉक दे दिए. सो रिमेनिंग लेफ्ट इज व्हाट? 21,000. 21,000 was paid. So what is the entry for that? Realization bank. Here also the payment only. Entry will be 21,000. Clear? Any doubts? अब देखो, there was an old typewriter that has been written off completely. It was estimated to realize what? 600. It was taken over by Rahul at 25% less than the estimated price. So Rahul's capital account to realization. Very good. Rahul to realization. कितना? 600 में 25% निकाल दिया तो 450. Next, Amit agreed to take over the responsibility of completing the dissolution at an agreed remuneration of 1,000 and bear the realization expenses. Actual realization expenses were 800 were paid by the firm. So realization to partner को हमने कितना promise करा? 1,000. So realization to partner's capital account to Amit's capital account. टू अमिट्स कैपिटल अकाउंट. अब देखो 1,000 था, क्लियर, बट फर्म ऑलरेडी पेड हाउ मच? 800. सो पैसे भी जा रहे हैं यहाँ पर आपको टू बैंक. कितना? 800. सो पार्टनर को कितना जाएगा? 200. एनी डाउट्स? रियलाइजेशन टू पार्टनर टू एक्सपेंस टू बैंक. लॉस ऑन रियलाइजेशन वॉज 54,000. लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए एंड बी इन द रेशियो 2:1. सो एंट्री क्या है? एस कैपिटल अकाउंट. You can distribute that. 54,000 2:1 ratio में कितना हो जाएगा? 54,000 into what? 2/3, which is what? 18 2 36,000. 18 ये होगा 54,000. Any doubts? Clear? ऐसे questions आ सकते हैं, ये आप expect कर सकते हैं. Clear? How deficiency of creditors is paid off at the time of dissolution of the firm? ये question अब देखो, सी देयर वॉज डेफिशिएंसी ऑफ क्रेडिटर्स को अभी पे करने के लिए हमारे पास एसेट्स रियलाइज करने के बाद मनी नहीं है. इन दैट केस अकॉर्डिंग टू द कैपिटल रेशियो
it will be paid off by the partners. ठीक है, clear? Now find out the sacrificing ratio and new ratio in the following cases. Sacrificing ratio और new ratio find करने के लिए बोल रहे, तो कैपिटल्स के रेशियो में दे देते हैं। मैं बताता हूँ। हाँ, वो कैपिटल के रेशियो में दे देते हैं, एफिशिएंसी। अब देखो ये क्वेश्चन, फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो इन द फॉलोइंग cases. A and B are partners sharing profits and losses in the ratio what? 3:2. C is admitted for what? 1/4 share. A and B decided to share the future profits equally. So old ratio क्या है बता सकते हैं क्या? A B का 3/5, 2/5. न्यू रेशियो क्या है बता सकते हैं क्या? इक्वली। अब देखो वाटरमेलन कितना है? 1/4. सो बचा कितना? 3/4. वो इक्वली बटना बोल के सोच रहे। सो 3/4 इंटू 1/2 कितना हो जाता? 6/8. सो 3/4 इंटू 1/2 विच इज़ वॉट? 6/8. एंड सी का रेशियो क्या है? 1/4 इंटू 1/2 विच इज़ 1/2/2 विच इज़ 2/8. 3 इंटू 1 3 हो जाता. So 3:2. This is nothing but what? New ratio. This is nothing but what? Old ratio. 3/4 into 1/2. 1/2. हाँ 2/2, क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम प्रपोर्शन में बनाना है, हमें 8 बनाना है. दैट इज द रीजन यू विल मल्टीप्लाई विथ व्हाट? 2/2. अब देखो फिर से समझाता हूँ. वाटरमेलन पूरा कितना है? 1 वाटरमेलन इज देयर. 1/4 बिलोंग्स टू हुम? द न्यू पार्टनर. सो बचा वाटरमेलन कितना है? 3/4. दैट विल बी शेयर्ड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन वाटर रेशियो नाउ इक्वली. सो 1/2 1/2. 3/4 को आधा आधा कर दो. 3/4 इंटू 1/2, 3/4 इंटू 1/2. क्लियर? सो ये हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 3/8. सो 3:3:2. ये हो गया न्यू रेशियो. एनी डाउट्स? ओल्ड रेशियो इज व्हाट? 3:2. सो व्हाट विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5. न्यू रेशियो कितना है? 3/8. 8 5 40. 8 3 कितना? 24 माइनस 15 विच इज़ व्हाट? 9/40. बी का कितना है? 2/5. 3/5 माइनस 3/8. नेक्स्ट 2/5 माइनस 3/8. 16 माइनस 15 डिवाइड बाई व्हाट? 40. 1/40. सो 9:1 is the sacrificing ratio. Clear? Any doubts? ये 28 आ गया. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. हाँ बोलिए सर. गुड सर.